Okay. Thanks. Today, what shall I take? So, because for you, I have not started the first tense. Okay. The first madam. tense, I did not start you. So, do you want me to start that tense or let me continue with perfect tense, like present perfect tense? Like, so what you No, want? Like, if you have option, you start it, madam. no, what is I, your option? You means, see, I am ready for both. I Okay. think Deepti has to tell. Think sure, Deepti, God. you are not So, bored. whatever you say. Okay, then you start, madam. Start Hmm. what from beginning? Uh, Simple present tense or present Simple perfect present. tense? Yes, Mm. a simple present. Hmm. Okay. So before I could start the simple present tense, Dipti will give you the glimpse of simple present tense because she is very well versed in that. Already I Okay. have explained her the tense. Okay, so it is a check for you. It is a check for you, like, okay, how well you have, how attentively you have listened my class, like. Now is exam for Deepti. Yes. No, actually Ma'am, for my other batch, no, I used to keep my, means like my beginners batch, no, I used to keep on Saturday the classes, like, okay. In the sense like, I ask them whatever I teach, no, they have to take class on that, okay. So that what will happen, teaching is the best way to learn anything, like, okay, whatever you want to learn, you need to teach that to somebody, like. So this was the technique my mentor taught me, like, Aisha, if you want to learn anything which you find difficult, start teaching to somebody. Okay, that is how I enter into this field, like, okay, then later on I found that it is very means like, piece of cake for me to teach, like, so I was enjoying the process of teaching. So when I want to learn anything, I catch hold somebody, like, okay, somebody with whom I can practice, like, so let it be my kids or my relatives or any relatives or my friends. Okay, so I catch hold them and I used to teach them whatever I have learned, any new thing if I have learned, like, okay. So that is how that gets strengthened in my memory, like whatever I teach. So this is She's motivational speaker. yes, She can teach easily, yes, and it is Ma'am, piece of cake for her. okay. in my case, what happened? Uh, when I was when I was learning car, how to drive a car. So my elder brother taught me many things कि ये इस इंजन ये होता है, ये माइलेज होता है, एंड ये होता है, वो होता है. I couldn't recall anything. I know only one thing: how to drive a car. That's it. So you know only Similarly, how to speak. similarly, I know how to use present tense and where we use present tense. I know that only. I don't know the formula. I forgot the formula. Yes, same goes with Sadik also, because Sadik, when I heard him for the first time, I had a call with him first time, okay, to know his level. Okay, for my other students, I asked them to record and send few question answers. So in that only I get to know that how many times they stammer, how many times they speak wrong grammar and all, like spelling. So means pronunciation mistakes, and also I get to know through their recordings, like, but I can't make Sadik with that. So I just asked him. I mean, I just had some conversation with him. So he We had spoke almost really. 20 minutes. So yes, he had really a nice conversation with me, and I find him a very good speaker. But the only thing is that, like, he's speaking without, I mean, like, because the moment when he had learned, he did not, means, might be he did not remember right now at moment, he don't remember the things, the grammar base, like, okay. So most of us, like, only we learn, but later on we forget the rule of grammar and all, like, but we apply the Correct. real English in our conversation. That's true. Now you both are applying real English in your That's true. conversation. So, but somebody, other person corrects you on what ground the person is correcting, you should have to have the knowledge. Okay. Last class, ma'am told that she had some correction with you and you don't know where, means like, on what basis she has corrected you. Like, okay, that's the reason this rule of grammar, knowing the rule of grammar is very essential. Like, okay, because see, for example, right now I am speaking with you. Okay. So, why, if the right sentence is absolutely right, why not to use in this tense? Why to use in other tense? Like, okay, for example, I live in India and I am living in India. Okay, I live in India is also right. I am living in India is also right. Okay,
I live in this house. Okay. I am in home or I am at home. Okay, both are right. In home also right, at home also right. Okay, but where different places we use, why the difference means, why we have to use in, where we have to use at. Okay, for that you need to have a grammar knowledge. Like, okay, so let me start simple present tense. I have not opened that PPT, so let me close this present perfect tense PPT. Okay, just let me open that PPT. Jipti, how was your beauty work is going on? It's going great. Nowadays, wedding season is going on, and Oh, it will end uh, near 15th or 14th, 20th March. okay. So Huh. another 1 month you will have. Yeah, is left. Yeah. Beauty. You will get so much blessing from a lot of people. Yeah. And curse as well. Cuts Curse from very groom less. side. As a groom side. Okay. Because they are looking very beautiful because of that reason. Yeah. Yes, madam. Yeah, 1 second. Can you all see the screen? Yes, madam. Sharing. Okay. Huh. So, first, I think so. Last class, I have explained you what is tense. What is tense? Can you just let me know, Sadiq? Tense मतलब क्या Tense है? is to use uh, time. It is the past, is using for past, yeah, future, yeah, present to decide the time. Yes. Tense That is मतलब tense मतलब time. Okay. Travel, tense is traveling, shifting in time, like present, past, future, like we move in time, like okay. So whenever we speak, जब भी हम बात करते हैं, we shift मतलब Ma'am, sometimes. excuse me. हाँ, Excuse me. Sorry to interrupt. yes. What is the most important thing when it comes to speaking in English? What is the most important ingredient to learn first? From where should we start? Like, Depends. It depends your level. Okay. What okay, level you are okay, like. Okay. If you are a beginner level, the technique is different. If you are in an okay. intermediate level, the technique is different. Okay. So So, which like, level you are I'm like. a intermediate level. Hmm. If I'm intermediate level, so what should I do? So for beginner levels, that is like, they need to go for the organic learning method. Like, okay, only listening, not learning grammar or rules, regulations and all. They need not to concentrate on all that. Like, for example, a child learns any language, the child doesn't pay focus on any tenses, grammar and all. Like yes, the child yes. start like, listening and practicing. That should be the beginner level, like, that is the formula for beginner level. Like, but when the child grows, when the child goes to school, then he or she needs to work what is like, the structure, speak, like, what is the grammar and all. Like from the KG classes we are taught, like, grammar, like, okay. So later on, what you need to do, you need to pay little focus on the grammar. Okay, grammatically how correct you should be, like, because now like, for your level, communication, you are very good at communication. But sometimes what will happen, we are human being, what we listen quite often, like, we start speaking, we start absorbing that. Okay, we imbibe that word in our communication and we use. If somebody, imagine that I am using some sentence structure or one vocabulary in front of you,
you, like, you know, it is very obvious that it is very evident that you, after some time when you communicate with others, like, you know, you grab that word from me and you use in your, okay. So whether the other person I am speaking right or not, you should have to have the knowledge of that, like, okay. So for that, you need to pay little focus on your grammar and then speaking, listening, grammar and speaking. These three things you need to do, like, okay. So when you go to the next level, like, okay, advanced level, then you need to learn advanced grammars, okay. Now at this stage, like, you know, if you means, like, you know, intermediate level, if you pay focus on advanced grammar, okay, like for example, we have C1 vocabulary, C1, C2, C3, okay, level of vocabulary, level of idioms, okay, that level of grammar. Okay, so that if you start paying focus as of now, like, what will happen? You don't find, means, like, you know, you don't find to work on your the basic things, like, okay. Nah, So that's true. depend on That's the true. level, you need to work on that. What level you are, like, you need to evaluate yourself, which level you stand, like. Got it. Okay. So simple present tense, first of all, tense is nothing but shift in the time, okay. So whenever we speak, we tell any action, okay. Now every sentence is made up with subject, verb and object, like, okay. Verb is a must, okay. Verb is nothing but the time, okay. Verb is action time, okay. Verb tells the time of an action, okay. So in any sentence, the subject and object always and always remain same. Subject and object never change, okay. Only what changes is verb. With the change of verb, we keep moving from past to present, present to future. For example, if I say I go to temple every day, okay, I go to temple every day. तो इसमें हमारा verb क्या है? Go है, okay. I go to temple, okay. I go to temple. That is, I is a subject, go is a verb, and temple is an object, like, okay. I go to temple. तो इसमें हमारा आई और टेम्पल जो है ना सेम रहेगा, सिर्फ अगर से मैं टेंस में प्रेजेंट से पास्ट जाऊंगी, पास्ट से फ्यूचर जाऊंगी, तो ओनली वर्ब चेंजेस, ओके. द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, लाइक फॉर एग्जांपल आई गो टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल. आई गो टू टेम्पल मतलब मैं टेम्पल जाती हूँ, ओके. आई वेंट टू टेम्पल मतलब मैं टेम्पल गई थी, ओके. आई विल गो टू टेम्पल मतलब मैं टेम्पल जाऊंगी. तो यहाँ पर सिर्फ देखिए आई एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है. तीनों सेंटेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है. सिर्फ क्या चेंज हुआ है? वर्ब चेंज हुआ है, ओके. तो only and only you need to pay focus, more and more focus on verb, okay. That is why I have shared with Deepti the verb chart. I think so with Sadik also I have shared the verb chart. If I haven't shared the verb chart, like, you know, I will share with you, like, you मतलब ऐसा नहीं है कि at one go में आप एक टाइम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. What you need to do, daily एक PPT, okay. For Deepti it is for you also, like daily 1 PPT, okay. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है. यू नीड टू लर्न, यू नीड टू असाइन, मतलब आज के दिन में मैं ये सिर्फ एक पेज ही करूंगी, ओके. एट द एंड ऑफ द वीक यू आर डन विद द पीपीटी, okay. You need not to pay more time also, more strain. You need not to take more strain to memorize that also. Just एक दिन में एक पेज, एक दिन में एक पेज, then in the end of the week, like, you know, you are done with that PPT, you are done with the verb chart, like, okay. So verbs जो है ना countless है, verb जो है ना countless है, क्योंकि English dictionary ऐसा है कि it is not one, मतलब it is not complete. As and when any new words, okay. English dictionary is a combination of Indian English, Indian means Indian vocabulary, French vocabulary, German vocabulary. तो English जो है ना ऐसा है कि वो very vast like an ocean. तो verbs भी बहुत vast हैं, we can't memorize, but जो quite often हम communication में use करते हैं, we need to know only those verbs, like. Cool. Okay, so that is what. After Madam, doing lots of research, our class, I think 2 months is the class, correct? In 2 months we will complete only basic grammar. Depends, like grammar. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर की क्लास ले रही हूँ मैं, ओके. मेरा सेपरेट पैकेज होता है जहाँ पर मैं सिर्फ ग्रामर की ही क्लास लेती हूँ, दूसरी कोई और क्लास नहीं लेती. बट पैकेज विच यू हैव ज्वाइंड इज स्पीकिंग प्लस ग्रामर,
Grammar, yes. तो इसीलिए जो है ना एक ग्रामर की क्लास So होती you है are talking जो about some speaking intermediate grammar. What is that one, madam? That is next inter level. इंटरमीडिएट मतलब दैट उसमें भी जो है ना अभी ग्रामर में सिर्फ इनिशियली यू नीड टू लर्न द टेंसेस, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, उसका सेकेंड लेवल होता है। ओके इनिशियली मैं Okay, अगर okay. सिर्फ वही बताने लगूंगी तो No, टेंस समझ, फर्स्ट यू I शुड got it. नो द नॉलेज ऑफ टेंस लाइक ओके सो Okay, लेट मी स्टार्ट लाइक okay, what are tense? Tense are simply the way we talk about time in English. Okay, only about time we talk in English in a sentence. If we talk about any action, which okay, the action denotes which time. Okay, it's denote the action is a present time, past time, or future time. Okay, only it is about time. Okay, these tenses changes from changes its forms. Okay, to express the time of an action. For example, go will become went. Okay, the first form is go, the second form is went, and third form is gone. Okay, so we'll go for future like okay. Go So went gone. to travel into tenses, to travel in time, the verb changes its form. Okay, from first form it will go to second form, second form it will go to third form. So it changes its form. Okay, basically there are three tenses. Major the branch of tense are like present, past, and future. Each tense again subdivided into four. That is simple present. Okay, present continuous, present perfect continuous. Same goes with past also. Past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Same goes with future also. Future present, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay, so all together we have 12 tenses. ओके हमारे पास 12 टेंसेस हैं। तो एक टेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, एक्चुअली दैट इज सेकेंड टेंस। ओके बिकॉज फॉर माय अदर क्लास आई हैव ऑलरेडी डन दिस। Present continuous. हाँ Present सो आई continuous. टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके बेसिकली हम जब भी जनरली हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं। 50% ऑफ द टॉक वी डू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मैं ये करती हूँ, मुझे मतलब मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, वो ऐसे करता है, मतलब ज्यादातर हम बात जो भी करते So हैं ना regular सिंपल activities we will प्रेजेंट use टेंस, simple present. Regular activities प्रेजेंट we will टेंस। use. ओके बट स्पेसिफिकली सम स्पेसिफिक एक्शन, कल की बात करना है, आने वाले कल की बात करना है, तो हम क्या करेंगे टेंस को चेंज करेंगे। बट 50% ऑफ द टाइम वी कम्युनिकेट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा जो है ना डूअर ऑफ द एक्शन। ओके सब्जेक्ट जो काम जिसके बारे में सेंटेंस है उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बैंगलोर इज अ गार्डन सिटी। तो मैं इस सेंटेंस में बैंगलोर के बारे में बात कर रही हूँ तो बैंगलोर मेरा सब्जेक्ट हुआ। ओके तो बैंगलोर डायरेक्टली मैं डायरेक्ट प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकती हूँ या फिर प्रोनाउन भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन बैंगलोर जो है ना प्रॉपर नाउन है, इसकी जगह मैं इट भी यूज कर सकती हूँ। ओके बैंगलोर इज अ गार्डन सिटी, इट इज द हार्ट ऑफ इंडिया। ओके जस्ट ओके इट इज वेल नोन फॉर इट्स क्लाइमेट। ओके तो मैं अभी इट यूज कर रही हूँ, इट करके यूज कर रही हूँ, ये प्रोनाउन हुआ। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे कितने प्रोनाउन हैं, हमारे 7 प्रोनाउन हैं। तो एक प्रोनाउन है आई, दूसरा प्रोनाउन है वी, तीसरा प्रोनाउन है यू, दे, दे, ही, शी, इट। ओके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे 7 प्रोनाउन हैं। ओके तो प्रोनाउन प्लेस अ वेरी, नाउन एंड प्रोनाउन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सेंटेंस बनाने में, है ना। हमको अभी सारा गेम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में भी, ओके सिंपल प्रेजेंट में भी, तो नाउन के बेस पर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। ओके सो यू शुड नो अबाउट 7 प्रोनाउंस। ओके और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं। ओके a sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action that is happening at present and does not
indicate when the action is expected to end. तो अभी हम simple present tense में आ जाएंगे. तो simple present tense हम कहाँ पर यूज करते हैं? कोई एक्शन एट मोमेंट हो रहा है, ओके, और एक्शन कब खत्म होगा हमको पता नहीं है, ओके. तो वैसा एक्शन, जनरली ऐसा एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख कर हूँ ना, आई ईट फूड, तो मैं खाना खाती हूँ, ओके. यू ईट फूड, ही ईट फूड, शी ईट फूड, कोई भी सब्जेक्ट हमारा कुछ भी होगा. तो हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं. तो हम वी कांट से लाइक व्हेन दिस एक्टिविटी लाइक वी स्टॉप दिस एक्टिविटी, ओके. मतलब हम खाना खाना कब छोड़ेंगे? 2 महीने के बाद में मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, या फिर 1 साल के बाद में मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, या फिर 10 साल के बाद में मैं खाना खाना छोड़ दूंगी. दैट टू बी अलाइव, ओके, वी नीड फूड. टू सर्वाइव वी नीड फूड, ओके. तो इसका कोई एक्टिविटी हो रही है जनरली, ओके, और वो पता नहीं है कि कब एंड होगी बोलकर, ओके. द मदर लव्स चाइल्ड, ओके. माँ बच्चे से प्यार करती है. तो माँ बच्चे से कल भी प्यार करती थी, माँ बच्चे से आज भी प्यार करती है, माँ बच्चे से आने वाले कल में भी प्यार करती रहेगी, ओके. वी कांट प्रेडिक्ट लाइक व्हेन द मदर विल स्टॉप लविंग आफ्टर फ्यू इयर्स, ओके. 2025 mother will stop, all mothers will stop loving the child, okay. तो वी कांट प्रेडिक्ट, कुछ भी एक्शन ऑनगोइंग एक्शन है. हर माँ बच्चे से प्यार करती थी, करती है और करती ही रहेगी. तो एक्शन एंड नहीं दिखाई दे रहा है उसका, तो ऐसे एक्शंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, ओके. द प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन. तो सारे प्लैनेट्स जो है ना सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. सो दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट. तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन. सो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद कोई पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम में सन मतलब प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे, अर्थ के इर्द गिर्द घूमेंगे, ऐसा कुछ मतलब कुछ फिनोमिना कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं. एट मोमेंट ऑल्सो ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, and future also it will be like past also the same thing. So any action, ongoing action, and we can't expect when the action is expected to end. Clear, Sadiq? Yes, ma'am. मैं fast जा रही हूँ क्या? Of course. No, no. If I am going fast, please stop me, because मुझे ऐसा है कि Ma'am. सिखा सिखा के ऐसे आदत हो गई है. Okay, yes. No, no tell Ma'am, me. problem. Sure. sorry to interrupt you. Hello. Yes. Ma'am, if we are speaking about the universal truths, then we use present tense. Is this so? Any universal truth, universal fact, Okay. daily routine, habits, हाँ. okay, any permanent action. So I will Okay. tell you in coming slides, I will tell you where to use like, okay. Perfect. Perfect. So this just Perfect. I gave the example of few example where ongoing action is there. Okay, ongoing action is there. For example, Sadiq, what time you wake up in the morning? I wake up morning 7:30. Okay, so I wake up at 7:30 a.m. in the, okay, I wake up at 7:30 a.m. Okay, so can you tell me any fixed date, any fixed time, like when you change this habit, and when you means like start getting up at 5 a.m. or 10 a.m. Okay, so have you any such plan? I think whenever we are going for any picnic, that is occasion, any particular occasion, okay, not like that, okay. मतलब आपकी जो आदत है कि सुबह 7:30 बजे उठने की, आप बता सकते हो कि ये आज से 1 साल के बाद में मैं 7:30 बजे नहीं उठूंगा, मैं 8:30 बजे उठूंगा, या फिर 5 बजे उठूंगा. कैन यू टेल एनी फिक्स डेट और टाइम दैट मतलब मेरा एक्शन, मेरी ये एक्शन जो है ना एंड हो जाएगा, 7:30 बजे उठने का मेरा एक्शन एंड हो जाएगा. ओके, सो डू यू हैव एनी हॉबी? आपका कुछ हॉबी है क्या? Yes, watching TV. Okay, so apart from watching TV, movies. Okay, so okay, watching television, watching movies is your hobby. Okay, so I watch television. Okay, I watch television every evening at 7 o'clock. Watching is not correct, madam. Watching TV is मतलब at present आप देख रहे हो तो right. okay. अगर आप at present देख रहे हो, I am watching television, right? Okay, अगर कुछ आदत है तो ing नहीं आएगा. Okay, I watch television every day. Okay, तो ये आपकी आदत है.
कैन यू टेल मी कभी आप मतलब टीवी देखना छोड़ दोगे आप आज से एक वीक बाद, एक मंथ बाद, एक साल बाद? No. कब कब आप छोड़ दोगे इसको? No, there is no any time. Okay, so any such things when you don't have end point, okay, आपका end point आपको पता नहीं है, you need to speak in simple present tense. Okay. Okay, आपकी जो आदत है उसके लिए आप simple present tense का इस्तेमाल करेंगे. Okay, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट के लिए, हैबिट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो हाउ वी प्रिपेयर अ सेंटेंस, फॉर्मूला क्या है हमारा सेंटेंस बनाने का? हमारा Subject, सब्जेक्ट verb, रहेगा, object. सब्जेक्ट हमारा या फिर डायरेक्ट नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन रहेगा. प्रॉपर नाउन मतलब सादिक. ओके, सादिक वेक्स अप at 7:30 AM. तो ये मेरा क्या हुआ, मैंने सेंटेंस बनाया प्रॉपर नाउन से. तो सादिक की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, ही वेक्स अप at 7:30 AM. तो ये प्रोनाउन हो गया. तो बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल, बैंगलोर इज अ गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. ओके, तो इट इज अ गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. ओके, इट इज also famous for it is also famous as IT hub. Okay, तो इंस्टेड ऑफ बैंगलोर मैंने प्रॉपर नोन की जगह मैंने प्रोनाउन भी यूज किया इट. ओके, तो likewise instead of Deepti I could also say she. Okay, she goes to temple every day. Okay, तो ऐसे मैं डायरेक्ट नॉन भी यूज कर सकती हूँ, प्रॉपर नॉन भी यूज कर सकती हूँ, या फिर प्रोनाउन भी यूज कर सकती हूँ. तो आपको इसमें I wake up is not a correct word. I will teach you. Okay, I will teach you. तो जब भी हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है. ओके, दिस इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. ओके, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा. तो इंग्लिश में जो है ना, आई वी यू दे, ये चार, आई वी यू दे ये चार जो है ना कंसिडर्ड एज प्लूरल. ओके, वी मतलब एक से ज्यादा लोग हैं. ओके, वी मतलब एक से ज्यादा लोग हैं. करेक्ट, प्लूरल. हाँ, यू मतलब कभी एक व्यक्ति भी हो सकता है. इमेजिन कीजिए कि आप और आपकी वाइफ हैं. ओके, आप या आपके फ्रेंड हैं. ओके, आप बात कर रहे हैं, तो आप आपके फ्रेंड को एक फ्रेंड है तो भी आप उसको कैसे रेफर करेंगे? हे हाउ आर यू. ओके, हाउ आर यू पूछेंगे. ओके, एक है तो भी हाउ आर यू ही पूछेंगे. या फिर इमेजिन कीजिए कि आपके बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं, हे हाउ आर यू. ओके, हाउ आर यू ऑल. तो मतलब यू में सिंगुलर भी आ सकता है, यू में प्लूरल भी आ सकता है. तो उसे कैटेगरी यू जो है ना प्लूरल में रखकर है. क्योंकि दे मतलब एक से ज्यादा. बोथ नहीं बोलते फिर क्या, बोथ ऑफ यू? अरे बोथ सब्स्टिट्यूट वर्ड है. ओके, बोथ ऑफ यू बोल सकते हैं. अभी 3 लोग हैं तो और क्या बोलोगे, 4 लोग हैं तो क्या बोलोगे? ओके, तो सिर्फ एक या 2 हो सकते हैं क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना. ओके, तो यू इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लूरल. ओके, दे मतलब दे हम किस जगह पर यूज करते हैं? अभी हम दोनों बात कर रहे हैं. ओके, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर नहीं है. ओके, इमेजिन दैट वी आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पर नहीं हैं, अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. एक से ज्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं. एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो अगर वो लड़का है तो ही बोलेंगे, अगर वो लड़की है तो शी बोलेंगे. ओके, अगर से एक से ज्यादा है, ओके, मोर देन वन. ओके, मोर देन वन है और वो एट प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है. ओके, इमेजिन दैट हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो ओके, आई हैव 5 मींस देयर आर 5 souls in my family. Okay, they are really helpful to me. तो they are very helpful to me. Okay, they always stand besides me. Okay, they always encourage me. तो मतलब दे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, वो एट प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है और मैं उनको रेफर कर रही हूँ दे से. गेटिंग मी? अभी आप आपके दोस्त, आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और जो भी यहाँ पर ग्रुप में नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो व्हाट प्रोनाउन यू यूज, ही और शी.
ओके एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं. ओके इफ दे वुड हैव बीन हियर इट वुड हैव बीन वेरी नाइस. इमेजिन कीजिए कि आप कभी पिकनिक को गए हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं आए हैं. ओके वो फ्रेंड्स भी आते तो बहुत मजा आता था. ओके दे इफ दे वुड हैव हियर लाइक यू नो इट वुड हैव बीन वेरी नाइस करके बोलकर. तो जो भी एट प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में, एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो आप प्रोनाउन दे का यूज करेंगे. क्लियर? तो ही एक लड़के के लिए. ओके ही शी एक लड़की के लिए रिप्लेसमेंट. इट कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट. ओके कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे. ओके आपके इर्द गिर्द कुछ भी है, फैन है, ट्यूबलाइट है, सोफा है, टेबल है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, माउस है, लैपटॉप है, जो भी है उसको आप क्या क्या रेफर करेंगे? इट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोबाइल. आप मोबाइल के बारे में बात करें. आई हैव अ मोबाइल. I bought it from so and so company. Okay, it cost me $100. Okay, it is really expensive, but its features are really good. Okay, तो आप क्या बोल रहे हैं? It आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं. You're talking about one mobile. Okay, so what pronoun you're using? It. अभी इमेजिन कीजिए कि आप एक पेन के बारे में बात करें कि आई हैव अ पेन. ओके माय फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी. ओके इट्स राइट इट्स रियली नाइस. ओके इट गिव्स मी अ नाइस हैंड राइटिंग. तो मैं क्या प्रोनाउन यूज कर रही हूँ? इट का इस्तेमाल कर रही हूँ. इमेजिन दैट मोर देन वन पेन. आप 2 पेन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर 3 पेन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बंच ऑफ पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इट का इस्तेमाल करेंगे कि आई हैव 5 पेन्स. ओके आई हैव 2 पेन्स. ओके इट इज रियली नाइस. आप इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओके आप क्या बोलेंगे? दे. क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? वो दे की कैटेगरी में चले जाएंगे. ओके ये एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो ही या शी इस्तेमाल करेंगे. अगर से एक से ज्यादा हो जाएंगे तो दे की कैटेगरी में चले जाएंगे. ओके एक ऑब्जेक्ट है, एक मोबाइल है, एक फैन है, एक टेलीविजन है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो इट का इस्तेमाल करेंगे. एक से ज्यादा हो गए तो दे की कैटेगरी में चले जाएंगे. ओके तो हमारे प्लूरल नाउन. ओके अच्छा तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आई सिंगुलर है. ओके आई जो है ना सिंगुलर है, तो आई को हम प्लूरल क्यों मानते हैं? Okay, many of my students they ask like because you did not raise this question, so but many other my students they tell like ma'am I is singular. Okay, how can you put it in plural category? Like okay, so I sometimes what will happen in Hindi also, you just pay more focus like for if we whenever we want to give respect to ourselves. Okay, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं बोलेंगे. ओके मैं नहीं बोलेंगे. मैं मतलब थोड़ा इरेस्पेक्टफुल हो गया. तो हम हिंदी में भी बात करेंगे, अपनी मदर टंग में भी बात करेंगे, तो रेस्पेक्टफुली बात करेंगे तो हम करके बात करेंगे. तो ऐसे ही आई को जो है ना इट इज ट्रीटेड अस लाइक रेस्पेक्ट मीन्स आई को ट्रीट करते हैं प्लूरल से. ओके सो आई इज स्पेशल कैटेगरी दैट गोज अंडर प्लूरल. आई तो होता है सिंगुलर है बट इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लूरल. ओके आई वी यू दे जो है ना हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स है. ओके ही शी इट हमारा ही शी इट, राधा, राजू, सचिन, पेन, पेंसिल कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो इस ये जो है ना सिंगुलर कैटेगरी में आएगा. ओके सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारा क्या है? व्हेनेवर सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके सिंगुलर वर्ब. ओके प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. अभी वर्क है ना ये भी हमको ऐसे लगता है कि ये सिंगुलर है बोलकर. ओके लीव सिंगुलर है तो ऐसा नहीं है, इट इज प्लूरल. ओके जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसके आगे हम यस और ES लगाने से क्या हो जाएगा? हमारा ये सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएगा. ओके वर्क को S लगाने से क्या हो जाएगा? सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. ओके लीव को हमने ES लगाया. ओके लीव्स. ओके लीव्स. गोस. ओके तो ऐसा S और ES लगाने से क्या हो जाएगा? वर्ब प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा. ओके सम वर्ब्स नीड ओनली S, some word needs ES. Okay drink, drinks. If you add yes it will be singular. हाँ S और ES मतलब ऐसा है. हमारा गो है. ओके गो को हम
GOS गोस नहीं लगाएंगे, ओके, GOES लगाएंगे, गोस, ओके। तो कुछ वर्ब में हमारा ES लगेगा, कुछ वर्ब में हमारा S लगेगा, ओके। तो उसको सिंगुलर कैटेगरी में लाने के लिए हमको S और ES का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन बैंक, ओके, मैं बैंक में काम करती हूँ। आई वर्क इन बैंक, वी वर्क इन बैंक, यू वर्क इन बैंक, दे वर्क इन बैंक, ओके। आई, वी, यू, दे प्लूरल है, ओके। जब हमारा ही, शी, इट आएगा सब्जेक्ट, ही Yes. वर्क्स इन बैंक, शी वर्क्स She इन works बैंक, in bank. इट वर्क्स इन बैंक, ओके। तो हम इट कैसे लग जाएगा? इट वर्क्स इन बैंक कैसे? अच्छा, अब अच्छा, आपके कोई पास कंप्यूटर है, ओके, आपके पास ओके कंप्यूटर है, ओके। कंप्यूटर बैंक में काम करता है, ठीक से काम करता है, ओके, इट वर्क्स प्रॉपरली इन बैंक, ओके। तो ऐसा जो भी इमेजिन करना है कि कुछ भी है, सेंटेंस ऐसा ही नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब लेकर बोल रही हूँ ना, वर्क, ओके। आई लिव, आई लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, they you live in India, they live in India, They okay. live in He India. lives in She India, lives in she India. lives in India, He he lives lives in in India. India, okay. तो राधा lives in India, okay, सादिक lives in Ram India, lives in India. okay, दीप्ति lives in India, आयशा lives in India। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, ES S. ऐड करना है। ये सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए है, ओके। सादिक Got क्लियर? it. Yes, madam. अभी आप एक सेंटेंस बनाइए मुझे। So now, till now I don't know that work is plural. Sorry. तो मतलब हम वर्क प्लूरल नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी वर्ब होते हैं ना, वो प्लूरल के लिए Okay. ही इस्तेमाल होते हैं, ओके। Okay. और ये रूल ऐसा नहीं है कि हम हर टेंस में यूज करेंगे, ओके। Okay. ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही Present हम tense. इस्तेमाल Okay. करेंगे, ओके। आप ये रूल आप परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ Okay. और सिर्फ ये रूल Only सिंपल present. प्रेजेंट टेंस Present. के लिए है। प्रेजेंट टेंस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 कैटेगरी होते हैं, तो ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होगा, ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल, आई लीव, ओके, आई लीव इन इंडिया, ओके। शी लिव्स इन इंडिया आएगा, ओके, शी लिव्स इन इंडिया। अभी मैं बोल रही हूँ कि वो अभी इंडिया में रह रही है, ओके, एट मोमेंट वो इंडिया में रह रही है, ओके, 2-3 दिनों के लिए गई है, अभी वो इंडिया में रह रही है, तो शी इज लिविंग इन इंडिया आएगा, शी इज लिव्स इन इंडिया नहीं आएगा, ओके। तो सिर्फ ये Okay. सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस बेस Verb. फॉर्म वर्ब, वर्ब है, ओके, वर्ब में भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन, ओके, गो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। Yes. तो Okay. ऐसे ही वेंट जो है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन, लाइक, ओके। Gone. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, ओके, डू, डिड, डन। तो ऐसा हमारा जो भी बेस फॉर्म है ना, डू है, गो है, राइट है, स्पीक है, जो भी बेस फॉर्म है, ओके, वो आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ओके। सो कैन यू जस्ट टेल मी बिफोर आई कुड मूव टू फर्दर स्लाइड, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सादिक? Object is particular मतलब thing. आपको सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन मिल गई है ना, Yeah, सब्जेक्ट मतलब subject Take is place. सेंटेंस, सेंटेंस में Yes. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके, सेंटेंस में हम किसके बारे Correct. में बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट है, ओके। शी लिव्स इन इंडिया, ओके, तो हम सेंटेंस में किसी शी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। ही वर्क्स हार्ड, तो हम इस सेंटेंस में कोई एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। Correct. आई प्ले टेनिस, तो मैं इस सेंटेंस में मेरे बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं या फिर That is सेंटेंस जो है ना, subject. डूअर ऑफ द एक्शन होता है, एक्शन हमेशा सब्जेक्ट करता है, ओके। Correct. तो सब्जेक्ट हुआ हमारा। वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई क्रिया, Action. मतलब सेंटेंस में Action. कोई भी वर्ड जो है ना जिसमें एक्शन है, वो हमारा वर्ब है, लेकिन गो, ईट, रन, स्लीप, वॉक, टॉक, ओके, तो कुछ भी एक्शन Action. हो रहा है तो वो हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट मतलब जिससे
objects give complete meaning to the sentence. Okay. Related to sentence. तो मतलब अभी मैं बोलूंगी कि I go. I go मैं बोलूंगी तो आपको क्या क्लैरिटी है? I सब्जेक्ट है हमारा, go वर्ब है. ओके. I go object नहीं मतलब है। आपको क्या क्लैरिटी है, मैं कहाँ जा रही हूँ बोलकर आपको ये पता चलेगा है कि मैं कहीं जा रही हूँ. ओके. मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ. क्लैरिटी है क्या कुछ आपके पास? No, objective is अगर not से there. मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करूंगी, आई गो टू मार्केट. ओके. तो यहाँ पर मार्केट मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ जो सेंटेंस को मीनिंग दे रहा है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है. ओके. Complete sentence. तो Yes. सेंटेंस को जो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट जो है ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मार्केट जा रहा है. ओके. और मार्केट को कौन आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट को कौन रिसीव कर रहा है? मार्केट रिसीव कर रहा है. तो ऑलवेज सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओके. तो an object gives complete meaning to the sentence. For example, if I say I play, there is no clarity, there is an ambiguity. Okay. मतलब I play object is मतलब not मैं there. क्या खेल रही हूँ. ओके. मैं टेनिस play खेल रही cricket, हूँ, चेस tennis. खेल रही हूँ, क्रिकेट खेल रही हूँ, क्या खेल रही हूँ, क्लियरिटी नहीं है. आई प्ले क्रिकेट, जब मैं ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ वहां पर, तो मुझे आपके सेंटेंस में क्लैरिटी है कि हाँ वो क्रिकेट खेल रही है बोलकर. ओके. So object adds the meaning to the, means object make the sentence complete. Okay. And it gives complete meaning to the sentence. Clear so far? Clear Sadik? Yes madam. तो हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए ये सेंटेंस में he writes a letter. ओके. हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. he writes a letter. ओके. we play cricket every day. तो हम जब we, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर we है. ओके. तो हमने प्ले लिखा है, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे. हमने वर्ब को एज इट इज लिखा है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है. अगर से वी की जगह शी होता तो क्या करते थे हम? प्ले के आगे एस लगा देते. प्लेस क्रिकेट. ओके. क्रिकेट एवरी डे. ओके. लाइकवाइज शी डांसेस वेल. ओके. शी डांसेस वेल. अभी आई डांस वेल, यू डांस वेल, we dance well. Okay. You they dance well. They dance well. They he dance well. dances well, she dances well, it Dances well. Okay. तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके आगे एस और ई एस लगा के हमको सिंगुलर करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, ये इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके. ओके. Okay, so यहाँ पर for example, okay, in this sentence the sun sets in the west. Okay, यहाँ पर क्या है? The sun sets in the west. So sun हमारा क्या हुआ? Singular. एक ऑब्जेक्ट है. सन हमारा एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ना. तो कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? इट की कैटेगरी में लाते हैं. तो the sun sets in the west. Okay. तो set, the sun set in the west नहीं बोलेंगे, the sun sets in the west. Okay. all the vehicles. Okay. all the vehicles मतलब यहाँ पर vehicle क्या है? प्लूरल है. all the vehicles. आपको कभी भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है वो देखना है. मतलब वेहिकल तो सिंगुलर है. ओके. बट वेहिकल्स है ना यहाँ पर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? प्लूरल हो गया. ओके. ऑल द वेहिकल्स स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग. ओके. यहाँ पर स्टॉप्स नहीं है, स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग है. ओके. क्योंकि वेहिकल्स किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे? दे की कैटेगरी में चले जाएंगे. ओके. मोर देन वन. ओके. श्वेता टीचर्स सोशल स्टडीज इन अ स्कूल. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन फीमेल, शी को हम एस और ई से ट्रीट करते हैं. ओके. द नोटिस. नोटिस भी जो है ना ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है. ओके. द नोटिस रीड्स नो पार्किंग. ओके. नोटिस पर क्या लिखा है? नो पार्किंग लिखा है. ओके. द नोटिस रीड्स नो पार्किंग. नोटिस रीड नो पार्किंग नहीं. ओके. नोटिस रीड्स नो पार्किंग. ओके. अगर से नोटिस रहा तो क्या हो जाएगा? द नोटिस रीड नो पार्किंग. तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. ओके.
राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स Leave at 7 in the morning. at Okay, 7 in the morning. तो दो तीन ट्रेनों के बारे में बात कर रही हूँ तो लीव आ जाएगा। एक ट्रेन के बारे में पर्टिकुलर एक ट्रेन के बारे में Leaves. बात कर रही हूँ तो लीव्स at 7 in the morning. Okay, that teacher said if she, okay, Yes. she works, Mm. if she works hard, she will pass. So Will she pass. works hard. Okay, she will pass. There goes the taxi. Okay, there goes the taxi. वहां टैक्सी जा रही है बोलकर बोलते हैं ना, तो there वहां पर goes the taxi, क्योंकि हमारी टैक्सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, टैक्सी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। देयर गोज द टैक्सी, अगर से टैक्सीज रहा तो वहां पर क्या हो जाता था, तो देयर वो गो द टैक्सीज। Yeah. ओके, देयर गो द टैक्सीज आ जाता था। अभी हमारी एक टैक्सी है तो हमारा क्या होगा, देयर गोज द Go. टैक्सी। got Yeah. it. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा, अभी पॉजिटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। ओके, तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हमारा किससे बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। ओके, आई गो टू मार्केट, आई वेक अप एट 7 AM। ओके, तो जो भी आई, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है। ओके, लाइकवाइज हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दैट इज डू नॉट और डज Do नॉट। not. Does not. ओके, तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट Singular. के लिए डू नॉट लगेगा, Do- सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए Plural. नॉट Plural के लिए लगेगा। do not. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट Singular. के लिए डज नॉट लगेगा। ओके, Does. या आई डू नॉट, ओके, आई डू नॉट, आई वर्क इन बैंक, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आई डू नॉट वर्क इन बैंक, नेगेटिव स्टेटमेंट। वी डू नॉट वर्क इन बैंक, you do not work in bank, Not work in the they do bank. not work They in do. bank. Okay, he does not work in bank, she does She not does work in not. bank, it does It does not work not. in bank. Okay, Radha Radha does does not. not work in bank, Sadik does not work in bank, Okay. Deepti does not work in bank। तो हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हेल्पिंग वर्ब मतलब नेगेटिव के लिए डज नॉट आएगा, प्लूरल के लिए डू नॉट आएगा। Do not आएगा। ओके, Okay. क्लियर सादिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, He, she. do or does helping verb positive। Ram reads book, Ram does not read book। ओके, they do not read book। ओके, यहाँ पर हमारा क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखिए राम रीड्स बुक। पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा क्या है, राम रीड्स बुक। हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट देखिए आप, राम डज नॉट रीड बुक है। Okay. इसमें डिफरेंस क्या है, पहले वाले Yes. पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने वर्ब के साथ में एस लगाया है। ओके, दूसरे स्टेटमेंट में भी राम ही है। ओके, बट उसके साथ में हमने एस नहीं लगाया है। ओके, तो द रूल ऑफ ग्रामर ऐसा है कि जब Negative हम में डू को डस बना देते हैं, ईएस दे देते हैं हम ऑलरेडी, तो फिर इसमें हमको और एस और ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है वर्ब के साथ में। ओके, पॉजिटिव में हम राम रीड्स बुक बोलेंगे। ओके, नेगेटिव में हम राम डज नॉट, डज को हमने ऑलरेडी, डू को हमने डज बना दिया है ईएस देके। ओके, तो हमने True. डू को डज बना दिया है ईएस देके, तो आगे हम फिर वर्ब के साथ में ईएस नहीं लगाएंगे, डबल हो जाएगा, डबल ईएस हो जाएगा। ओके, सो राम डज नॉट रीड बुक आएगा। ओके, राम डज नॉट रीड्स बुक नहीं आएगा। ओके, ये थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, कुछ दिनों की प्रैक्टिस लगेगी इसको प्रैक्टिस करने के लिए। लेटर ऑन ये आपके मतलब डेली लाइफ कन्वर्सेशन में जब आप इसको परफेक्ट हो जाओगे तो तब यू नीड नॉट टू पे मोर फोकस। मगर आप जब भी आप ये सेंटेंस को अभी यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हो, तो conscious. यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हाइल टॉकिंग। ओके, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, मतलब मैं कौन सा Conscious. मतलब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, मतलब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थोड़े दिन के लिए, मतलब जब तक आपको इसको हैंग, मतलब as long as you get hang of it,
you need to have a mindful talk. Clear? तो राम रीड्स बुक आएगा, राम डज नॉट रीड बुक आएगा. Read books. ओके, तो इसमें हम डज नॉट के साथ में रीड्स नहीं लगाएंगे. ओके, ही गोज टू टेम्पल, ही डज नॉट गो टू टेम्पल. ओके, ही राइट्स लेटर, ही डजंट राइट Does लेटर. not- ओके, डज नॉट को आप शॉर्टन भी कर सकते हैं, डजंट भी बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन. अभी हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज है ना, तो हेल्पिंग मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा. ओके, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज. ओके, डू Does, आई. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा. मतलब हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में भी वही रहेगा. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जस्ट द हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, डू आई वर्क इन बैंक, क्या मैं बैंक में काम करती हूँ? डू यू वर्क इन बैंक? ओके, डू वी वर्क इन बैंक? डू दे वर्क इन बैंक? ओके, डज ही वर्क्स इन, डज ही वर्क इन बैंक? ओके, डज शी वर्क इन बैंक? डज इट वर्क इन बैंक? ओके, डज राधा वर्क इन बैंक? Does Sachin work in bank? Okay, so likewise we can make a just subject verb and object same. Okay, if we need to add do or does to make a question statement, and at the end we need to add question tag. Clear, Sadiq? Yeah, yes, madam. Yes, madam. I want you right now, I want you to take one plural subject, one singular subject, make one positive sentence, make one negative sentence, make one interrogative sentence. Okay. She play. फर्स्ट आप प्लूरल सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी एक प्लूरल Okay. सब्जेक्ट. They play. दे प्ले, क्या है दे प्ले? They play cricket. हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीन आना है. Yeah, ओके, दे प्ले yeah, क्रिकेट. they play cricket. नेगेटिव, They don't play cricket. ओके. Do they play cricket? ओके, क्रिएट. अब ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट इमेजिन, आपके Okay. आपके फ्रेंड का नाम, कोई एक फ्रेंड का नाम. Okay, okay. Shifa ओके, play शिफा. cricket. शिफा, Plays cricket. हाँ, ग्रेट. Shifa plays cricket. Shifa does not play cricket. ओके, Does Shifa play cricket? ग्रेट. ओके, Yes, madam. अभी इंटर और नेगेटिव बनाइए आप इसको. इंटर और नेगेटिव. Negative. Simple negative. That means. इंटर और नेगेटिव. ओके, इंटर और नेगेटिव मतलब क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव आएगा. ओके, शिफा प्लेस Does क्रिकेट. Radhika not? ओके, शिफा प्लेस क्रिकेट. शिफा डज Does नॉट प्ले Shifa क्रिकेट. ओके, डज शिफा प्ले Does क्रिकेट. Shifa ओके, Hmm. डजंट शिफा प्ले क्रिकेट. ओके, ये Doesn't, इंटर और okay. नेगेटिव हो गया. ओके, Okay, doesn't. अभी Okay. आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब Hmm. के साथ में डू नॉट आई प्ले क्रिकेट नहीं आएगा. ओके, डू Okay. आई नॉट प्ले क्रिकेट ऐसा आएगा. सो सिर्फ आई के साथ में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा. बाकी के सारे सब्जेक्ट्स प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डस के साथ में नॉट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, डोंट वी प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट. Don't they play Okay. cricket? Doesn't she play cricket? Doesn't he play cricket? Doesn't Okay. he play cricket? Doesn't it play cricket? Okay, ऐसा है. जब हमारा सब्जेक्ट आई है तो ओके, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. ओके, डोंट आई प्ले क्रिकेट तो मतलब इट डजंट. ओके, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट ऐसे. मतलब अभी आप पूछना है Okay. कि Hmm. क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ, क्या मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, क्या मैं आपको समझा नहीं रही हूँ. ओके, तो ऐसा मतलब इंटर और नेगेटिव है ना.
क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ मैं और नेगेटिव भी है। क्या मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, क्या मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ? ओके, लाइकवाइज। ओके, रूल ऑफ ग्रामर। ओके, 1 सेकेंड। वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ओके, टू शो अ हैबिचुअल एक्शन। कभी भी हमारी हैबिट के बारे में कुछ भी बात करना है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप किसी भी अपनी हैबिट के बारे में, अपने फैमिली मेंबर की हैबिट के बारे में, जिस किसी भी व्यक्ति के हैबिट के बारे में आप बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई रीड्स, ओके, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ओके, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। तो किसी की आदत होती है ना न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप उसका ऐसा नहीं कि मतलब उसको जिसको भी जो आदत है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। ओके, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही हैज रेड न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं बोलेंगे। ही रीड्स न्यूज़पेपर, ओके, शी रीड्स न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। मतलब हमारी आदत बताने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई प्ले गोल्फ एवरी मंडे, मैं हर मंडे गोल्फ खेलता हूँ। ओके, शी गेट्स अप एट 8 एवरी डे। ओके, तो मेरा बेटा हर दिन 8 बजे उठता है। ओके, तो हम किसके बारे में? दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें। ओके, ये उसकी आदत है कि वो 8 बजे उठता है, उठती है बोलकर। ओके, तो ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो वो हर दिन स्कूल जाता है, दैट इज हिज रूटीन डेली हैबिट। ओके, तो जो भी हम रोजाना करते हैं, जो भी हमारी आदत है, उसके लिए हम बात करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। She gets up is correct word, correct? हाँ So many people are using she get up, she get up, she get up. हाँ, एक्चुअली दिस इज नॉट, मतलब जो हम इंडियन इंग्लिश में इसको बहुत ज्यादा नोट करते हैं। ओके, इन इंडियन इंग्लिश हम इसको ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। नेटिव इंग्लिश स्पीकर ऑल्सो मेक्स द सेम मिस्टेक, बट उनको हम ज्यादा नोट नहीं करते क्योंकि वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं। ओके, सो बट देन टू बी ऑन अ सेफर साइड, लेट्स वी प्रैक्टिस द राइट थिंग्स। Okay, ओके, she gets up is the correct word. ओके, शी गेट्स अप एट 8 एवरी डे। अभी इसका नेगेटिव बनाओ। She doesn't get up, gets up. She doesn't get up. हाँ, she doesn't get up at 8 every day. Okay, question statement, interrogative statement. Does she get up does she at get up 8 every day? 8 a.m.? हाँ, okay, interrogative. Doesn't she get Does up at she- 8 every day? हाँ, क्लियर। तो ऐसे मतलब अभी मुझे आज के बाद में आपका नेक्स्ट मंडे, मतलब पता नहीं मंडे मैं लूंगी या मैम लेंगे, लेकिन मंडे मेरी एक्टिविटी है कि आप मुझे आई वी यू दे ही शी इट, ओके, सात प्रोनाउन है, तो 7 प्रोनाउन के साथ में पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोनेगेटिव स्टेटमेंट आप मुझे लिख कर नहीं देंगे। ओके, क्योंकि मेरा वे ऑफ टीचिंग इज लाइक, हम लोग स्कूल से आज तक हम लिखते आ रहे हैं। ओके, वी आर गुड राइटर, बट वी ऑल वांट टू बी गुड मैम, स्पीकर। एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हम्म कि मैं भी ये चाहती हूँ कि जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट है हम्म अभी वो ज्यादा रहे, बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस उसमें रहेगा ना, जितना बेस क्लियर होगा, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, तो वो एक फ्लो रहेगा बात करने का। उतना स्पोकन इंग्लिश बेटर रहेगा। स्पोकन इंग्लिश बेटर रहेगा कि हाँ, हम मुझे पता है कि हाँ ये रूल है, ये इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो मतलब मैं सही बोल रही हूँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस देगा। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि मैं भी चाहती हूँ कि ग्रामर की जो ये है आप वाली क्लास जो है वो ज्यादा रहे। हाँ, but what is the issue is like, you know, we want more and more focus on मतलब आपको ऐसा नोटिस नहीं आएगा, मतलब मैं सिखाऊंगी तो सिर्फ आप क्या करेंगे? ग्रासिप करेंगे। ओके, दिस इज फॉर ओनली योर नॉलेज। हाँ ओके, हाँ, द माई क्लासेस इज मोर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मतलब ग्रेट।
आपको आपसे हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा बुलवाना। आपका मतलब हम आपको ऐसा नहीं है कि आओ ग्रामर की नॉलेज ले लो, आपके आप इनपुट डालो। ओके, वी वांट एन आउटपुट, ट्वाइस आउटपुट वंस इनपुट। But आपके I पास really miss ऑलरेडी your नॉलेज class, है। ma'am. मैं I really लूंगी, miss your I will class. take your class, I will take your class, not that issue, like, but what is the thing, like, ma'am makes you speak, ma'am force you to speak on That's various true. topics, That's various topics। that's true. मतलब अभी कभी That's आपको true. खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट के ऊपर बात करने के लिए बोलेंगे, कभी आपके हाँ. कोई फैमिली फंक्शन, कोई कुछ ओकेशन है, कुछ है। sometimes it could be a general talk, sometimes it could be something like debatable talks, like where आपको सोचने का मतलब यू नीड टू स्ट्रेन योर माइंड। ओके, ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन बहुत आती है एक्चुअली। आई That's एक्सपीरियंस true. दिस थिंग्स भाई, बिकॉज मेरा मतलब पहले टाइम तो मैं सिलेक्ट हो गई, आई वर्क फॉर अ लॉजिस्टिक कंपनी। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मेरा लक था वो, ऑल ऑफ बाई चांस, आई डोंट नो हाउ आई Hmm. गॉट सिलेक्टेड। तो आई वर्क, तो Hmm. उसके बाद में क्या किया मैंने, मुझे आई टेस्टेड दैट मीन्स वर्किंग इन अ गुड कंपनी। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, आई हैड टू टेक अ पॉज बिकॉज आई हैड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर। Okay, so I just took a pause. Like after taking a pause, like again when I want to start my career, again I was like, I appeared for many several interviews. Okay, so all the interviews, okay, I was very good. I means मैं जब जो भी answer कर रही हूँ, in working in an MNC is like, we need to go through several rounds of interview, like not one or two, like, okay, so where I failed thrice. Okay, where I failed thrice, then at last like, they told that they will get back to me, but they did not get back to me. Again, next company, they told that they will get back to me, but they did not get back to me. Thrice, like, I thought, like, let me have a courage, gather the courage and ask the reason of they me not means selecting for that post, like, okay, where I have the knowledge for that post and they have not selected me for that post, like, okay, so then they told, like, you crossed all the level but you failed in GD. Okay. Okay, GD was on spot topic. Okay. Okay, actually I wasn't aware of that round of, like, they, because they asked me, okay, after crossing this, go that round, like, 6-7 rounds I crossed. I passed in 5 of the round, like, okay, the round, like, where I have to give the talk on some unexpected topic. Okay, I thought, okay, it was not my knowledge, so this way if I skip, okay, but that was the base for their company. Okay. Customer may ask unexpected question, how will you deal for that? Okay, and when you don't know, how will you like, if you don't know any topic, okay, how politely, how humbly you respond, that is like, the sentence you use, that sorry, okay, I'm sorry, I have no knowledge about it, like, I don't know. If I tell I don't know, okay, so I'm extremely sorry, I need to work upon it, so means let me take it as a homework. Okay, let me work upon this topic and get back to you next time. Okay, so This the is the way right you way, yeah. handle the GD, okay, that That's there true. I realized, like, how important topic, talking on various topics. Okay, imagine that Sadiq is working in one company where the, like, he had some group discussion, his employees or his boss somewhere is sitting, and where, like, he need to talk on some topic. Okay, if he is prepared in all these rounds, what ma'am is asking, different topics, like, how to start a sentence. Okay, whenever you talk on topic, you can't say, like, if I ask you, okay, which is your favorite food, ma'am, my favorite food is biryani. No. Okay, you need to start the sentence with some introduction to the topic. Okay, introduction to the we have topic. just learned. Okay, Yes, introduction to the topic. Then after that, you need to give general idea. General to the then topic, conclude. then personal Then to the conclude. topic, personal to the topic. Yes. Okay, for Personal example, to- yes, eating, like if I ask you about restaurant, okay, restaurant is quite a common nowadays. It is an eating outlet. People goes to restaurant to have a whale of time. Sometimes they go to some official meetings. Yes, everyone nowadays are like, no, it is like, मैं general बोल रही हूँ. First मैंने introduce किया कि what is restaurant? Restaurant is an eating outlet. फिर मैंने जनरल बात किया कि people go to restaurant to have a whale of time. Earlier people used to go only to have, but nowadays people are
more you visiting to restaurant for official meetings, get-togethers, parties, functions and all like okay. So मैंने क्या किया, जनरल बात किया, फिर बाद में मैंने क्या किया, मुझे रेस्टोरेंट जाना पसंद है या नहीं पसंद है, then I need to get personalized to the topic like okay. So this way like you know you need to speak. So you will be observed on various parameters. You don't know on which parameters you are observed. Okay. So we want you to be very perfect in all these talks like okay. So grammar Got it. is only an input. Okay. Imagine कीजिए Okay. कि मेरे बहुत सारे students हैं जिनको मैं जो भी सिखाने जाऊंगी ना, earlier you might be knowing Deepti like Lakshmi. Okay. Lakshmi knows better than me. ओके लक्ष्मी को मैं जो भी सिखाऊंगी, मैम ये मुझे आता है, मुझे पता है. बट हैव यू एवर लिसन टू लक्ष्मी? You got an opportunity to listen to her Lakshmi and you we No. have what's that participant name? Miss Navneeta. earlier, no, not Navneet. male. Okay, what is his name? I'm skipping. Okay, so like they all know grammar, but the grammar is only here. Okay, the grammar is not while speaking. How to use, how to talk. Okay, so it is not only input. It should be an output. Okay, so you need to speak. You learn little, but you apply more. Okay, how do I learn this language? When I learn this language, okay, so I had a very much struggle with this language. I was just using, when I was working in a logistic company, I was working for international clients. Okay, I was more on listening mode. Okay, they used to speak to me a lot and my output was little, but what my listening helped me to communicate. Okay, I was just listening, I was imbibing all that conversation, communication within me. Then after that I myself wondered like you know after few years working over there, like you know people, my friends and all who knows me before, like okay, so they used to tell like okay Aisha, so means you are speaking spoken English has grown, means like you know it has gone to the next Improved. level. Okay, so like I wasn't aware of it, like okay, so how come only listening and practicing listening so I did not pay focus on input. Okay, मतलब ये grammar लो, ये लो, वो लो बोलकर, तो I want you to expose to more of speaking. Let my grammar Perfect. class will be there, like you attend this. If you want my grammar class more, I have no issue, like, but where you will apply, कहाँ पर, which platform you have, do you have any other platform where you are speaking day night? Okay मैम हमारा practice तो चल रहा है वहाँ पर, सिर्फ हम यहाँ पर input की knowledge Got लेने it, आए got हैं. it, So got you it. Now need a it's clear, ma'am. platform to Yeah. work. Okay, so I want you to Absolutely give right. the platform to communicate more, twice communicate, Absolutely right. absorb one time, like. Yes, ma'am. Yeah. Now it's clear, Okay. ma'am. Where do Correct. we use You're simple correct. present tense? The second place is, first place is to talk about our habits. Okay. Second place is to express an universal truth, scientific facts और definition. आप कुछ भी definition बताओ तो simple present tense में ही आएगा. Continuous tense, past tense, future tense में नहीं आएगा. Okay. Any formula, आप कोई formula बताओगे तो simple present tense में आएगा. तो उसको past, present, continuous tense में कहीं में भी नहीं आएगा. Okay. So to talk any universal truth, scientific facts or definition, we use simple present tense. For Simple example, present. water boils at 100 degrees Celsius. When water reaches to 100 degree, sorry, when we heat water at 100 degree, it start boils. Okay. So water boils at 100 degrees Celsius. Okay. People need food. Okay. People need food. It is a fact. Okay. Necessary. Green vegetables are rich in fiber. Green vegetables are rich in fiber. It is a fact, scientific fact. Okay. Yes. It snows in winter here. Okay. It is also a fact. Okay. Every winter here it snows, like okay. It snows here in every winter. Okay. 2 and 2 makes 4. So anything universal truth, scientific fact, any definition, we use simple present tense. So you got to know 2 use of simple present tense. जब हम habit की बात करेंगे, हैबिट की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, डेफिनेशन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. Got it. Okay, so third place where we use simple present tense is stative verbs. Okay, stative verbs. Stative verbs क्या होते हैं? हमारे पास डायनामिक वर्ब्स होते हैं और हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं. सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब. ओके, एक्शन वर्ब डायनामिक वर्ब होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब सिंपल वर्ब होते हैं. फॉर एग्जांपल
रन, ईट, वॉक, टॉक, ये सारे जो है ना एक्शन वर्ब है। यहाँ पर रन में भी एक्शन है, ईट में भी एक्शन है, स्लीप में भी एक्शन है, वॉक, टॉक सब में एक्शन है, फिजिकल एक्शन। ओके, थिंक, आई थिंक, I think, I believe, I have, I agree, I disagree, okay, I understand, ये सारे जो है ना इसमें एक्शन है। अंडरस्टैंड में भी एक्शन नहीं है मगर ये वर्ब है। आई अग्री, अग्री भी वर्ब है बट एक्शन नहीं है। ओके, आई नो दीप्ति, तो इसमें क्या है, नो भी वर्ब है बट एक्शन नहीं है। जिस वर्ब में भी एक्शन नहीं है वो जो है ना स्टेटिव वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब। ओके, तो हम नॉन एक्शन वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्टेटिव वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, शी इज टॉल। ओके, आई लाइक आइसक्रीम। ओके, लाइक है तो इसमें कुछ एक्शन नहीं है, तो एनी सच थिंग्स स्टेटिव वर्ब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प, आई नो दीप्ति। ओके, आई अग्री विथ सादिक। तो जो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो स्टेटिव वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे, कभी स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोलेंगे। ओके, आई एम नोइंग दीप्ति, आई एम अग्रीइंग विथ सादिक, आई एम लाइकिंग कस्तूरी मैम। तो ऐसा मतलब No, हम इसको स्टेटिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं यूज I करेंगे, like. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर सादिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपके पास एक कार है। ओके, आई हैव अ कार बोलेंगे, आई एम हैविंग अ कार नहीं बोलेंगे। I have car. आई Okay. हैव I अ have a car. बंगलो बोलेंगे, आई हैव अ बंगलो बोलेंगे, आई एम हैविंग अ बंगलो नहीं बोलेंगे। No. ओके, तो आपके पास कुछ भी है, पोजेशन, आप कुछ भी पोजेस करते हैं तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं डालेंगे। Okay, ma'am. We use the present simple tense to describe situations that are more or less permanent. ओके, जो भी परमानेंट है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं डालेंगे। ओके, या फिर परफेक्ट में भी नहीं डालेंगे। ओके, आई वर्क एट बैंक। ओके, मैं बैंक में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग एट बैंक नहीं बोलेंगे। I ओके, work at- आई वर्क एट बैंक क्यों बोलेंगे, मैं इस बैंक में काम करता हूँ। आई एम वर्किंग इन बैंक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में लेंगे तो आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बोलना चाहते हो कि आप दीप्ति को बताना चाहते हैं कि मैं इस बैंक में काम करता temporary, हूँ। temporary. आई वर्क इन बैंक बोलेंगे, आई एम वर्किंग इन बैंक आप जब बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैं टाइम बिंग एक वीक के लिए या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए मैं इस बैंक में काम कर रहा Okay. हूँ। ओके, I तो work- Yes, Now ma'am. it's clear. Yeah. टेम्पररी आ जाएगा। जब आप परमानेंट बताना Temporary. चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। I'm working on this project. ठीक है, आप जब बोल रहे हो कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद Or में कुछ sleep. नहीं है। ओके, आई वर्क, Yes. मतलब कुछ भी परमानेंट चीज है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आपको बताना है कि मैं इस घर में रहती हूँ। ओके, आई लिव इन दिस हाउस। ओके, आई एम लिविंग इन दिस हाउस मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में मैं यहाँ से मूव हो जाऊंगी। Hmm. Okay, I leave this house and I move to some other house, like okay, तो I live in this house मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं परमानेंटली यहाँ पर रहती हूँ। I live in India मतलब I am the permanent citizen of India, I live in India. India. Okay, तो I am living in India जब मैं बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया में आई हूँ, अभी मैं रह रही हूँ, मतलब मेरा कुछ काम होने के बाद में मैं इंडिया से वापस चली जाऊंगी। ओके, तो Yes. लाइकवाइज तो आपको जो भी परमानेंट बोलना है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ही इज मैरिड। ओके, वो शादीशुदा है, सो दैट इज हर परमानेंट ट्रूथ। ओके, शी हैज 2 डॉटर, शी इज हैविंग 2 डॉटर्स, बहुत सारे बोलते हैं शी इज हैविंग 2 डॉटर्स। ओके, But this is incorrect. हाँ, तो यहाँ पर द बस लीव्स एवरी 15 मिनट, यहाँ पर हर 15 मिनट में बस निकलती है। ओके, द बस लीव इन एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट के बाद में दूसरी बस आती है और यहाँ से जाती है। ओके, सो समथिंग परमानेंट एक्टिविटी। द प्लेन अराइव्स एट 3 PM मतलब ये प्लेन का शेड्यूल है कि ये 3 बजे आएगी। तो ओकेशनली हियर एंड देयर कभी कभार चेंज होता है बट परमानेंट उसका टाइमिंग क्या है, 3 बजे ये प्लेन लैंड होती है। ओके, दिस प्लेन अराइव्स एट 3 PM।
ओके। Hmm. स्कूल 9 बजे स्टार्ट होके 3 बजे खत्म होती है, तो ये स्कूल का परमानेंट टाइमिंग है। ओकेशनली टाइमिंग में चेंज हियर एंड देयर, लाइक ओके द स्कूल The bus leaves every 15 minutes because of हाँ, bus is singular. Oh, yes, sir. I know, madam, leaves. द बस लीव्स है, हाँ, सिंगुलर Because bus- सब्जेक्ट है ना, बसेस Oh, रहा तो sorry. द बसेस लीव द बसेस लीव एवरी 15 मिनट आएगा। ओके, क्लियर? एनीथिंग परमानेंट yes, आपको yes. बोलना है। मेरी ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होती है, तो ये ऑफिस का टाइमिंग है कि 9 बजे स्टार्ट होती है। ओके, माय ऑफिस बिगिंस एट 9 AM। ओके, तो ऐसे आप जो भी परमानेंट है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। क्लियर? Yes, madam. Clear. Yes, ma'am. Okay, so let's practice. Let me check Sadik's understanding. I dash my day at 8 AM. I start my day. I start my day at 8 AM. Okay. My parents dash me a lot. Love me. My Loves me. parents loves me आएगा। Love me. Love me. हाँ, तो पेरेंट्स मतलब माता Parents पिता too. होते हैं। ओके, तो 2 होते हैं। माय Teacher. मदर लव्स मी अलॉट आएगा, माय फादर लव्स मी अलॉट Father is आएगा। loves me. ओके, जब पेरेंट्स आएंगे तो माय पेरेंट्स लव मी अलॉट आएगा। ओके, द टीचर dash us in the class, last class. Okay, the teacher, Inform. okay, the teacher Inform. informs us in the last Informs class. us. Last class. Informs. Okay, my son dash me a lot. Love or loves? Loves. 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 Okay, Loves my me a son lot. loves me a lot. Loves. Ram dash not read books. Ram does not. Ram does not. We dash not think. We don't. We do not. We do not think. We do not think. Okay, so likewise, we come to the end of the session. Hmm. I usually dash to school. Go है यहाँ पर. I Goes. usually go to school. Correct? Go. Okay. Go. Usually They dash visit us often. they They visit us visit. often. Visit. Okay. You dash play basket once in a week. You play You basketball. Play. Yes. Okay. Plays. Tom work every day. Works. Tom works every day. Works. Okay. He Tells. always dash tell us Tells. funny stories. Tells. He always Tells. he He always always tells us. tells us funny Funny stories. story. Yeah. Okay. She never help me. Helps. Helps. Helps me with She that. never helps me with that. Okay. Mhm. Martha and Kevin dash swim twice a week. Swim. Okay. In this club, people usually dance a lot. Dance a lot. Dance. Okay. Linda dash take care of her sister. Takes care. Takes. Okay, Linda Takes takes care. care of her sister. Okay, John rarely dash leave the country. Leaves. John rarely leaves the leaves country. leave the country. Okay. Yeah. Now Okay. concept is very clear. Okay. Hmm. Okay, Sadiq, do you like going to movie theater? Yes. Why or why You not? like good. Because I like watching movies in the theater. Okay. What is the compared reason? to compared to TV, because if I'm watching movie if I'm watching movie in theater, it will be big screen. Picture is clear, and also Okay. volume volume effects are good. So because of that, I like going to movie theaters, watching movie in theaters. Okay. So yes, Deepti, do you like to go to movie theater? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I like go to movie, but I only prefer most recommendation movies. And I set before going to movie, I set an intention just to take away, like
I'm very much, whenever I watch a movie in theater, I'm very focused on the dialogues, and I personally feel one dialogue can change our life. Mhm. So I set my intention. Yeah. Okay, And great. I watch with the I watch with so much of focus. Okay. Mm. I like, because movie, whenever you go to movie, many of us like, go to movie to just come out of our daily humdums. Okay, our life goes so monotonous. Okay, Mm. we Mm. want to come out of this monotony of this life, and once a while, if we go visit to a theater, it takes away all tension. It makes us refresh for the next activity. Mm. Like, okay, so we can start our beginning next day with fresh mind, fresh mind, body, soul. Like, okay, Mm. so movie Mm. we go to. I always go to movie for refreshment. Mm. Okay, and it is also a source of gathering, get together. Like, Mm. okay, whenever we friends Mm. we want to meet, like, we feel like best way to visit to any mall, spend some quality Mm. time, have our lunch over there, then go to means like watch one movie over there, then come back. So that is the purpose, like, where we get, that is a place where we can also spend some time with our near and dear ones. Like, Mm. okay, what is your favorite movie and describe in few words? Sadiq, which is your My favorite favorite, movie? currently my favorite movie is Pushpa, because Push- I like the movie, I like the story, and also songs. Songs are good. Um, the reason why I like the movie, because that language belongs to my native. Okay. Then story also belongs to my place, and the director has um, directed very well. Just a minute. Yeah, okay. Start. Yeah. Directed the movie very well. Addition to that, the choreographer, the dances are very good. Choreographer done very good dance choreography. Because of the reason, I like that movie. Great, great. Madam, I want one clarification. Yes. Pushpa is my favorite movie. Like that is, we need to use is. Pushpa Yes, is my yes, favorite yes, movie. yes, yes. See, Because I will tell. my confusion is here. We are talking about present tense. So Mhm. is will not come in present tense, because I Why have not? doubt. It will come in present tense. Okay, is amizar will come in present tense, but not as helping verb, as a main verb. Amizar Yes. can come. For example, if you want to tell that, if I want to tell that I am a teacher, okay, I am a teacher. So my subject is I, am is the main verb. Here am is not helping verb. Am is acting as main verb. Okay, I am a teacher. Teacher is in my role. Okay, my object is teacher. I am a teacher. Okay, Pushpa is a movie name. Is means hai. Okay, so this comes. It is not acting as a helping verb. Like here, you are not adding. Is Pushpa is what you told that sentence is? Pushpa is my favorite movie. ओके पुष्पा इज माय फेवरेट आईएनजी मूवी, नहीं ऐसा नहीं आएगा ना, तो पुष्पा इज मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. Amizar can act as a main verb, okay, but not as a helping verb. I told that subject, verb, and object. Okay, verb can Yes. be any verb, like, okay, it can be amizar also, like, but not amizar is acting as a main verb, not as a helping verb, like, okay. I am teacher, I am a teacher, तो मैं टीचर हूँ बोलेंगे ना, तो इसके लिए ये मेन वर्ब आ गया इसका. ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर आई एम टीचिंग का मतलब आई एम जो है ना हेल्पिंग, एम हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है. तो हम जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर यूज करेंगे तो एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. Yes. Yes, Deepti, what is your favorite movie and describe in few words?
But my favorite movie is Three Idiot, and there is a main reason. Two dialogues completely changed my life. Okay. One was, just follow your heart, just follow your heart, and whatever you want to do, just express with your parents. Otherwise, later you will regret. I wish I could make it possible. Yes. So just wholeheartedly just express your emotions with your parents. Don't feel hesitant. Have a courage to speak out. Mhm. Number two was, follow your passion. Mm. In future, maybe you earn less. Otherwise, still you will feel satisfied because you are following your passion. So you will not see the watch. You will enjoy. You will be in that flowing state, and you will enjoy whatever you want. So follow your passion, make your passion your profession, then you will be happy. Great, great. That And is I actually did the social both message. of them. Yeah. So Correct. in my real life, I implemented both the dialogues, and it completely transformed my life. Okay. That's why I love Three Idiots. It had a social message, okay, and it also had a message that don't go with the conformity. Okay, conformity is like, what the society wants from you, what the family wants from you, what the trend is there, like, okay. So don't sometimes be a non-conformist, okay, if it is for good, if it is for good, like, okay, because people wants your family members wants you to be good, okay, study, no, I want to be non-conformist, I don't want to study that, I want to go with my flow. That is not, if it is for good and you want to stand out of the crowd, if you want to go against the norms, okay, be non-conformist, but like, don't follow like the expectation of others, okay, what is family's expectation, what is society's expectation, what is others expectation, friends expectations, what is teachers expectations. No, don't, if it is for good, like for example, you are working for some company and you're not happy with that company, if I leave this job, what my wife will think, what my parents will think, what my family members will think, okay, if you just try to be non-conformist, if it is like, for your betterment. Yes, ma'am. Okay, that's what that movie all about. Okay. Yes. Yeah. Okay, so who is your favorite actor and why? Are you talking about me, or Okay, are you talking to me, or Sadik, Mr. Sadiq? okay, who is your Sadiq. favorite Okay, no actor? problem. मैं 7 को free हो जाऊंगा. Okay, yes, Deepti, you tell. He's on So call. my favorite. Yeah, I can start. I can start. Please, Okay. please go ahead. Okay. My my favorite hero is Salman Khan. The reason is when I was kid, when I started watching movies, I started with Maine Pyar Kiya first movie. From that day to till now, he is my favorite hero. The mainly so many people are good actors are there, but the reason why I like Salman Khan is he will do lot of social services, charity, lot of charity. Even he, not only he, even his father. His father is a very good human being. Uh, um, I like the way they adopted one girl from road, and these all things are attracted me to continue as a favorite hero. I'm not talking about hero in terms of only acting, in terms of real hero. So I Great. like Salman Khan. Even till Great. today, he will do a lot of charities, and till today, in the not only in the acting field, in the real life also, he is hero. He dominate. He influence. He help lot of people. Even in the movie, even for somebody want movie, somebody need help.
because I like him. He's my always favorite hero. Okay, in simple terms, what you could say, he's a philanthropist. 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 Philanthropist ma'am means matlab? Philanthropist person who does lots of charity. Anyone who does Great. lots of charity, help in the betterment of the society. Okay, Great. he invests his money on others. Okay, so that is the Great. person we tell, no, he does lots of charity, he's very kind-hearted person, he's very down to earth, he's a very good humble being, human being and all. Like instead of we telling all round looping around the bushes, he's a philanthropist. Okay, so in one word, Can you spell? Can you spell, madam? Can you spell? PHILANTHROPIST. Philanthropist. He's a philanthropist. Great. New word. Great. Okay, is Deepti, who is your favorite actor and why? Ma'am, my favorite actor is Mr. Nawazuddin Siddiqui. Okay, great. Because I admire him a lot, because I have heard his story and it touched my heart. In her initial days of his career, he has faced so many challenges. He worked as a watchman, and he used to do his job in the night, and in the morning he was looking for the roles, and everybody was laughing at him, and everybody was saying, just look at your face. Do you think that you are meant to be hero? But he never accepted this concept. Failure. In his image, he was the hero, and he worked hard, and it doesn't matter whether the role is small. मतलब एक जो कहते हैं ना pickpocket, he played in one role, in one interview he said he went for a क्या कहते हैं उसको, उसका जो स्क्रीन टेस्ट के लिए, he went for a screen Audition. he went for a audition and he rejected. They rejected. वो क्या था कि उनको मुर्दा चाहिए था, एक डेड बॉडी का रोल उसको दिया गया था, एंड ये कह के उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यू आर शॉर्ट हाइटेड एंड वी आर लुकिंग अ टॉल dead body. Tall dead body. Dead body. Look, matlab, can't I have no words what he has faced, but still he never gave up. He keep on working on himself, and the day came कि now वो उसने जो भी उसको रोल मिला, उसने इतना खूबी से निभाया कि अब उसकी कैरेक्टर को देख के रोल्स लिखे जाते हैं. जस्ट लाइक वो कौन है वो बाबा साहब बाल साहब ठाकरे, and many roles on his character, like उसकी पर्सनालिटी को देखकर डायरेक्टर्स ने लिखे हैं. So it's a huge impact. मतलब like he's a real hero, I must say. Great. And he never gave up. With me also, mine is no other hero like except Irfan Khan. Okay, Irfan Khan was my like all-time hero. I just whenever I watch his movie, you know, I feel like some real life character, not as a hero. Okay, not as a hero. Natural hero. Whenever I watch his movie, you know, I feel like as if one among us. Okay, he is not some superhero. Whenever you just observe his roles, no superhero role he plays. Like, okay, he always Common man. Normal. Just say as normal one man, among us. Okay, that really touches my heart. Like, okay, some many of the time heroes, like, you know, heroes are expected to be superhero. It means in a sense like anything. 6 feet Okay, they are and not among dollar us. Like, okay, it is not like any activity, the acting they does, the role they play, like, you know, that doesn't somewhere connect with us. Like, but Irfan Khan and this what you told that what is his name? Your hero, Deepti Nawazuddin. These both role you just see it is like interrelated to with one another. Like, you know, they both plays like the role of a common human being. Yes. That's true. Great. Okay, so last question we will have, then after that we will wind up. It's almost Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Okay, according to you, are action movies better than comedy movie? Why or why not? Yes, Sadiq. Yeah.
See, according to me, comedy movies are better than action movies. The reason is, see, in our day-to-day life, we have so much pressure, so much work pressure, hectic work. Again, if you are watching action movies, so we need, see, majorly we will go for movies for relaxation. Okay, if you are watching comedy movies, we will have relax in the mind. So again, if you are watching action movies, it will give again pressure to the mind. So I think that comedy movies are better than action movies. So I like always comedy movies. Whenever I'm watching movies, I select only comedy movies. I will not leave any comedy movies. Like example, Welcome. Welcome movie, I seen more than 50 times. That is very good comedy movie. One of my favorite comedy movies. Okay. So you could say instead of comedy movie, you could also say hilarious. Okay, I always Hilarious. love hilarious movies. Hilarious also the substitute word for comedy. Okay. Yes, Deepti. Yes, ma'am. Hilarious. Always comedy movies, because in our day-to-day life we have so many challenges, we have so many negativity around us. So this is the opportunity to laugh out loud, and it gives us refreshment for a day. So I would say it's always best to watch a comedy movie. Hilarious Yeah. movie. Yes. Okay, so let me give you one vocabulary word. Sorry, one idiom for you. Okay, Yes, ma'am. bouncing of the ball. Bouncing of the ball. Okay, this is idiom. Okay, you can use. For example, you just talked about we'll be busy in our daily routines. Okay, that could be many times it will be stressful and all like. So you could also say the entire week, the entire month, we will be bouncing off the ball, means doing lots of stressful activities. Okay, bouncing off the ball means very active. Okay, very active. The entire month we will be active doing something. Okay, as a homemaker, we need to play our role. As a like breadwinner, we need to play our role. So the entire month we will be bouncing against the wall. Okay, so one hilarious movies can make us refresh for the next month. Act means to start our beginning of the month with fresh mind. Keep bouncing off the wall. For example, if Adipti is quite busy since morning, Adipti, why you did not did that? Means did your homework? Ma'am, I was very occupied. I was bouncing off the wall since morning. Okay, I did not get one single minute to breathe. Okay, so I was bouncing off the wall. In the sense, like I was so occupied. I was doing lots of activity after this, one after activity, one after the other. I was doing back to back activities, and I did not get time to do these things. Okay, I was bouncing off the wall. Active, very active, and at the same time, I was very busy. Okay, so you could also use in a productive way, na ma'am? In a productive sense. हाँ, प्रोडक्टिव मतलब ऐसा है कि हम सांस लिए बगैर काम कर रहे हैं ओके मतलब बाउंसिंग ऑफ द वॉल लाइक ओके बॉल से ऐसे जाके टकरा के फिर वापस आना इट इज इन दैट सेंस लाइक मतलब एक काम के बाद दूसरा काम दूसरे काम के बाद अभी हम सारा मंथ ले लो सारा वीक ले लो कैसे रहेगा हमारा आज रात सोने से पहले कल सुबह उठकर क्या काम करना है ओके दैट विल बी देयर इन आवर माइंड सुबह उठते ही एक काम हाथ में ही रहता है अगेन वन वर्क इन हैंड वन वर्क इन माइंड ओके इसके बाद में वो करना है ओके फिर वो होते ही नेक्स्ट आफ्टर दैट आई नीड टू डू दिस ओके तो ऐसा हमारा माइंड कब हमको पीस ऑफ माइंड मिलेगा व्हेन वी टेक सम ब्रेक okay such breaks like okay having a talk with our family member having a talk with our friend going out for one movie okay all these things are relaxation activity we do like okay so the entire week we'll be bouncing off the wall and one movie can help us to like come back to our work with a it can act as a power pack okay like we come back with our
power back performance. Like, okay, next week we can perform. Imagine that you're so very you were so very um busy in your activities, and again some next task we assign without any break, like your performance won't be so better. Like, okay, that's why, like, every company has this rule to take the staff, take the member employees for vacation. Okay, all registered company, all registered firms, they need to take at least for movies, for one lunch or some vacation. It is a must. Any organization, that is a must. Okay, so I will take your leave now. On this note, I believe you ma'am. might have enjoyed my already- class. Okay. No, we really enjoyed our class. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank Thank you, you very Mr. much. Sadiq. Okay, Good night. Sadiq, Good did night, ma'am. Good night. did you got my class today? Did you enjoy the class today? Yes, madam. I A enjoyed. lot. I learned today present tense is whatever you told is exactly correct, because it is useful It's for almost very much clear. 40 to 50% of the spoken English. So Yes, present yes, tense yes. is very important. Okay, great. All the Thank you, concepts were clear. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you very ma'am. much. Good night. Thank you. Sweet dreams. Bye bye. Thank you, Deepti. Good night. Good Bye. night. Good